guys. In the civics textbook till now we have studied local self-government institutions, India's constitution and our political system or government structure. In this class we are going to study India's relation with the world. Okay, last year in civics we studied about local self-government. Okay, बहुत सारे जो institution है local self-government के उसके बारे में हमने पढ़ा and also India's constitution and also political and government structure of India. But in this class we are going to study India's relation with the world. You must have understood world geography through the study of geography. You must have become familiar with the global historical events through the study of history. Okay, हम world geography के बारे में हमने geography में पढ़ा, ठीक है, and global history के बारे में हमने history में पढ़ा, right? Now through the study of political science, we are going to study India's relation with the world and some major global issues. Now with the help of political science, we are going to study about India's relation with the world and also some major global issues. उसके बारे में हम पढ़ेंगे, okay? We are dependent on different persons, institutions and organizations in the society for different reasons and for different facilities. Our social life is interdependent and mutual cooperation has a very important place in it. Just as it is true about individuals and society, it applies to different nations as well. Okay, we are dependent on different person. Okay, हम सब जो individual है, okay, वो एक दूसरे के ऊपर dependent रहते हैं, institutions के ऊपर dependent रहते हैं, different organizations
डिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना. ओके. All the countries of the world are dependent on each other for one reasons or the other. However big, prosperous or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. Okay, all the countries of the world
important events. First World War. The First World War was fought between 1914 and 1918. Major countries of Europe took part in it. Europe had a very central place in the international or global system at that time. Okay, First World War was fought between 1914 and 1918, yani for a period of 4 years, and major countries took part in it. Okay, European countries took part in it, and Europe had a very central place in the international or global system. Okay, central place था यूरोप का. During that time, the war caused a tremendous loss of life and property. The country which joined the war suffered tremendous economic losses. Okay, because of war there was tremendous loss of life and property. वॉर के वजह से बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ. ओके, एंड ऑल्सो द कंट्रीज विच जॉइन द वॉर हैड टू सफर इकोनॉमिक लॉसेस. जो कंट्रीज वॉर को ज्वाइन किए उनको इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा. इवन द कंट्रीज विच डिड नॉट जॉइन द वॉर वर इम्पैक्टेड बाय द वॉर. द इकोनॉमीज ऑफ द विक्टोरियस एज वेल एज the losing countries collapsed. Even the non-participating countries also had to suffer a lot. Impact उनके ऊपर भी गिरा because of war. And जो victorious country यानी जो जीतने वाली country है और जो हारने वाली countries है, दोनों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा and economic crisis face करनी पड़ी. Okay? Now see the countries involved in the First World War. Okay, countries were divided into two teams. दो टीम में डिवाइड हुआ. First is Allied power and then Central powers. Allied powers में कौन कौन थे? Britain, France, Russia, Italy, America. Okay, these were the countries in Allied powers. And Central power में कौन थे? Germany, Austria, Hungary, टर्की एंड बुल्गारिया. ये जो थे सेंट्रल पावर्स में थी. मतलब ये दो टीम के बीच क्या हुआ? फाइट
वॉर अवॉइड हो, भले ही कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो, अनबन हो, व्हाटएवर, लेकिन कंट्रीज के बीच वॉर नहीं होना चाहिए, शांति से वो मसले को सॉल्व किया जाए, बातचीत करके सुलझाया जाए, ये उनका एम है। ओके, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर major changes came about in Europe and outside Europe. For example, earlier empires in Europe collapsed and new nations came into being. Okay, first world war के बाद यूरोप में बहुत सारे changes आए। Okay, major change क्या था? पहले जो empires थे, यानी जो राजा महाराजाओं के जो empires थे, वो कोलैप्स हो गए क्योंकि वो बहुत ही ऑप्रेसिव उनका रूल होता था। ओके, ऑटोक्रेटिक रूल होता था, वो कोलैप्स हो गया और नए नए नेशंस इमर्ज होने लगे। ओके, many European countries had their colonies in the continents of Africa and Asia. Movements for independence started in these colonies. These movements challenged the hegemony of the European nations. बहुत सारे जो यूरोपियन नेशंस थे वो एशियन और अफ्रीकन कंट्री में जाके अपना कॉलोनी सेटअप करने लगे, यानी वहाँ के रीजन को, वहाँ के कंट्रीज को डोमिनेट करने लगे वो लोग। एंड मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दीज कॉलोनीज एंड उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के लिए लोग स्ट्रगल करने लगे, मूवमेंट करने लगे वो कॉलोनीज में। This movement challenged the hegemony. Hegemony means leadership, यानी जो places है, जो continents, अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज है, जहाँ पर यूरोपियन कंट्री ने जाके अपना कॉलोनी सेटअप किया था, वहाँ पर लोगों ने उनके खिलाफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, League of Nations was established after the First World War to establish peace, but it did not succeed at preventing war. Okay, League of Nations क्यों establish किया गया था? So that there is peace, ठीक है, international peace हो, disputes ना हो, but it failed in its attempt. Okay, वो fail कर गई at preventing war. Autocratic regimes came up in Germany, Italy, Spain and other countries. All these developments culminated in the Second World War. Autocratic regimes यानी oppressive rule, harsh government, okay, डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट का जो डिक्टेटरशिप है वो जो था which existed in Germany, Italy and Spain और भी बहुत सारे कंट्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ओके, Indian soldiers on a battlefield in the First World War. Now you can see the battlefield. Okay, First World